so loud they hear you in the Middle East. तो लाइन वगैरह मूव होना स्टार्ट हो। नाजरीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अमन अमान में होंगे। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज एक इफ्तार पे जा रहा हूँ और वो शायद लंदन की सबसे अहमियत वाली जगह है। वो जगह कौन सी है? वो है ट्रफलगर स्क्वायर, जो कि 19वीं सदी में कायम किया गया और बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो संगियो, मैंने सोचा आज मैं पैदल ही मार्च करता हूँ वहाँ तक। तो चलें फिर मैं आपको वहाँ तक लेके जाता ये माहौल तो फिर बारिश वाला बन गया है यार, क्या करें इस मुल्क में। ये क्यू आप देख सकते हैं, बहुत लंबी क्यू है। ये ऑल द वे वहाँ पे देखें जाके, वहाँ तक क्यू है। टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं वो लोगों को पास करने का, लेकिन ये देखें ट्रफलगर स्क्वायर पे इस टाइम पे उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बंदे मौजूद हैं। यहाँ पे रश वगैरह बहुत ज़्यादा है। जी जनाब, फिर तो लाइन वगैरह मूव होना स्टार्ट हो गई। अभी हम अपनी जगह पे जा रहे हैं और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। QR कोड्स मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, मैं उसको स्कैन वगैरह करूँगा। देखें जी, वो हेलीकॉप्टर भी आ चुका है। अगर आप मैं जूम करके बताऊं तो ये मीडिया की कवरेज वगैरह के लिए आता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग जमा हुए हैं। ऐसा लगता है कि एक पूरा मूवी की देखने के लिए आए हैं, पूरा हजूम लगा हुआ है।
celebrating heritage across नाज़रीन मैं the कोशिश United करता हूँ Kingdom. आपको And it's घूम के iconic बताने to की to be डिफरेंट जगह पे closing जाके Ramadan, our डिफरेंट final लोकेशंस पे Iftar जाके in the और city of London. ताकि We are आपको एक आइडिया हो सके कि celebrating of the थ्रू आउट किस तरह का इवेंट वगैरह हो रहा है अगर आपको इस साइड से बताऊँ ये देखें Okay, so without further ado, who's ready to start the program? A little bit louder than that. Who's ready to start? तो जब हम एंटर हुए हैं तो यहाँ पे जो कि इनके मेन स्पॉन्सर्स थे उनकी तरफ से फ्री फूड मिल रहे हैं तो आपको पता है भाई को फ्री फूड बहुत अच्छा लगता है फ्री आइटम बहुत अच्छा लगता है व्हाट एल्स आर यू गिविंग अस टुडे Coconut oils, and then we've got coconut waters with the meal later. कोकोनट वाटर एज वेल Yeah, ओके enjoy. परफेक्ट थैंक यू ये देखें जी मुजस्मा ये है अबू बकर सो इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा है इस्लामिक रिलीफ की तरफ से एक स्टॉल है वहाँ पे चल के देखते हैं इस्लामिक रिलीफ वाले वहाँ पे वो क्या दे रहे हैं आई थिंक Okay, let's try North London. So if you're from North London, make some noise. Okay, all right. I'm a South Londoner, so I want to hear it. South London? Yes! No, guys, East London where it's from. So every single East Londoner, uncles and aunties in the corners, make some noise if you're from East London. I think you win every time. And America. America represented But right everyone here. outside of London. And a few outside London as well. Okay, well, without further ado, we want to welcome every single one to this event. We're honoured to have them here as well. But I think it's important to mention as well, especially on the Iftar, the open space. We are a global community. Omar, and then it spread. A few people to organise and change attitudes and change the world for the better. And I genuinely think when people across the globe see the beacon that is London, where we think our diversity is a strength, not a weakness, where we know it makes us richer, not poorer, where we know it makes us stronger, not weaker, they'll realise they will not succeed. They will not succeed dividing us one against another. They'll not succeed in making us hate one another, because we know what the antidote is. The antidote is our religion of peace. The antidote is breaking bread together. The antidote is busting those myths about Islam. So look, thank you for coming here tonight. You chose to come having seen the weather forecast. You stayed when the heavy rain come. And we'll be praying, we'll be hearing the adhan call, and breaking bread knowing the weather. That demonstrates the forces of evil, the forces of hatred can never succeed. So I want to end how I began, but this time, when you return the greeting of peace, and we ask for the barakah of our Creator, I want it to be so loud they hear you in the Middle East. Assalamu alaikum! And for 2 days' time, Eid Mubarak. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
जी नाजरीन, तो इस इफ्तार के इवेंट में बारिश ने बहुत तंग किया। लगातार बारिश लगी रही, उसकी वजह से ना मैं वीडियो रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी तरीके से कर सका, लेकिन मैंने कोशिश की जितनी मैं आपके लिए वीडियो वगैरह बनाऊं और आपको बता सकूं वहाँ पे इफ्तार का माहौल कैसा था। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स के सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।